Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Zahra Noreen, course instructor of Plant Physiology 1, BOTN 3119. Today we will talk about the organization of the photosynthetic apparatus. The architecture of a typical higher plant leaf is particularly well suited to absorb light. Its broad laminar surface serves to maximize interception of light. In addition, the bifacial nature of the leaf allows it to collect incident light on the upper surface and diffuse both scattered and reflected light on the lower surface. Gross morphology is not, however, the only factor enhancing interception of light. Internal cellular arrangements also play an important role. The anatomy of a typical dicotyledonous leaf, mesomorphic leaf, is shown in the figure in the coming slide. The leaf is sheathed with an upper and lower epidermis, and the exposed surfaces of the epidermal cells are coated with a cuticle. Here a schematic diagram of a typical dicotyledonous leaf is shown. You can see here the cuticle, which is a protective layer before the epidermal layers, the upper epidermis, the lower epidermis with stomata, photosynthetic reactions takes place in the specialized internal membranes of the chloroplast called thylakoid. A typical leaf cell contains number of chloroplasts. Up to 100 a number of chloroplasts can be present in a single cell. The chloroplast has three membranal systems: the one which is outer membrane, inner membrane, and a third membranal system which is known as thylakoid membrane. Thylakoid membrane can be of two types: the one which is in the stacked form and known as granathylakoid, and the other one which is in the flanked area of the stroma and connecting the two granathylakoid is known as stromathylakoid or stroma lamella. The cavity of the thylakoid membrane is known as lumen. It is the site where the hydrogen ions are accumulated and generate a gradient across the thylakoid membrane between stroma and lumen of the thylakoid, and hence help in the formation of ATP with the help of ATPase enzyme. Those are also located on the thylakoid membrane. In photosynthetic eukaryotes, photosynthesis takes place in the subcellular organelle known as the chloroplast. In the coming slide, we have an electron micrograph of a thin section from a pea chloroplast. The most striking aspect of the structure of the chloroplast is the extensive system of internal membranes known as thylakoids.
All the chlorophyll is contained within this membrane system, which is the site of the light reaction of photosynthesis. The carbon reduction reactions, which are catalyzed by water-soluble enzymes, takes place in the stroma, the region of the chloroplast outside the thylakoids. Most of the thylakoids appears to be very closely associated with each other. These stacked membranes are known as lamella, singular lamella. Each stack is called as granum. The exposed membranes in which the stacking is absent are known as stroma lamella. Two separate membranes, each composed of a lipid bilayer and together known as the envelope, surround most types of the chloroplasts. This double membrane system contains a variety of metabolite transport systems. The chloroplast also contains its own DNA, RNA, and ribosomes. Many of the chloroplast proteins are product of transcription and translation within the chloroplast itself, whereas others are encoded by nuclear DNA synthesized on cytoplasmic ribosomes and then imported into the chloroplast. The transmission electron micrograph of a chloroplast from Pisum sativum, thin section with an ultramicrotome, is shown here. You can see the stroma lamella, which is the known stacking region of the thylakoid membrane, the grana thylakoid, the stacking membrane, which forms a coin-like structure, then the stroma, which is a region surrounding the thylakoid membrane, and the outer and inner membrane are also shown in this diagram. Here is a schematic picture of the overall organization of the membranes in chloroplast. The chloroplast of the higher plants is surrounded by the inner and outer membrane, and the region of the chloroplast that is inside the inner membrane and surrounds the thylakoid membrane is known as the stroma. This one, which is shown here in yellow color, it contains the enzymes that catalyze the carbon fixation and other biosynthetic pathway. Thylakoid membranes are highly folded and appears in many pictures to be stacked like coins, although in reality they form one or few large interconnected membrane systems with a well-defined interior and exterior with respect to stroma. The cavity or the space within the thylakoid is known as lumen. Thylakoid contains integral membrane proteins. A wide variety of proteins essential to photosynthesis are embedded in the thylakoid membranes. In many cases, portions of these proteins extend into the aqueous region on both sides of the thylakoids. These integral membrane proteins contain a large proportion of hydrophobic amino acids and are therefore much more stable in a non-aqueous medium, such as the hydrocarbon portion of the membrane. The reaction centers, the antenna pigments, protein complexes, and most of the electron transport enzymes are all integral membrane proteins. In all known cases, integral membrane proteins of the chloroplast have a unique orientation within the membrane. Thylakoid membrane proteins have one region pointing toward the stromal side of the membrane and the other one oriented toward the interior portion of the thylakoid known as lumen. The chlorophyll and accessory light gathering pigments in the thylakoid membranes are always associated in a non-covalent but highly specific way with proteins. Both antenna and reaction center chlorophylls are associated with proteins that are organized within the membrane so as to optimize the energy transfer in antenna complexes and electron transfer in reaction center, while at the same time minimizing the wasteful processes.
In the previous slide, I told you that many of the protein complexes are arranged in a specific manner in the thylakoid membrane. और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो भी मेम्ब्रेन होती है वो इंटेग्रल मेम्ब्रेन है, और इंटेग्रल मेम्ब्रेन का आप कहने की डेफिनेशन ही ये है कि वो दोनों साइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिस जिस मेम्ब्रेन में वो एम्बेडेड होती है प्रोटीन, वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसके दोनों रीजन्स को टच करती है। तो यहाँ भी एक आपको D1 प्रोटीन जो कि PS2 रिएक्शन सेंटर का हिस्सा है, उसको इसकी स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो दिखाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया है कि इंटैक्टल मेम्ब्रेन क्या होती है, कि उसका एक हिस्सा फ्लैंक करता है एक एक्वस रीजन जो कि स्ट्रोमा है यहाँ पे, और दूसरा हिस्सा जो है वो ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में मौजूद है। और वो हिस्सा इसमें प्रोटीन का जो कि ऐसे अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल है जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, वो हिस्सा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फ्लैंक कर रहा है। Here you can see that 5 loops of the D1 proteins are present in the thylakoid membrane, और जो एन टर्मिनस है यानी कि वो टर्मिनस जिस पे अमाइनो जिसको टर्मिनस हम बोलते हैं NH2 जो ग्रुप होता है प्रोटीन का, वो स्ट्रोमा की तरफ है, और कार्बोक्सिलिक एंड जो है या कार्बोक्सिल टर्मिनस जो है वो थैलाकॉइड ल्यूमेन की तरफ है। Photosystem 1 and 2 are spatially separated in the thylakoid membrane. हम जानते हैं कि दो फोटोसिस्टम हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में ऑपरेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ मिलके। ये दोनों ही फोटोसिस्टम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं। PS2 के रिएक्शन सेंटर को अगर हम देखें तो पूरा का पूरा रिएक्शन सेंटर along with its antenna chlorophylls एंड एसोसिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आती हैं, इज लोकेटेड प्रीडोमिनेंटली इन द ग्रेना लैमेला, यानी कि वो हिस्सा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का जो कि स्टैक्ड फॉर्म में होता है, उसके अंदर ये प्रोटीन्स ज्यादा एम्बेडेड होती हैं। PS2 रिएक्शन सेंटर और इसका एसोसिएटेड कंपोनेंट्स। PS1 रिएक्शन सेंटर जो है along with its associated antenna pigments and electron transfer proteins, और इसके साथ साथ एक और चीज भी इसके साथ आप कह लें कि एसोसिएटेड होती है, दैट इज द कोपलिंग फैक्टर, या जिसको हम ATPase एंजाइम सिंथेज के नाम से जानते हैं, जो कि ATP की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारे जो PS1 रिएक्शन सेंटर उसके एसोसिएटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं, these are found almost exclusively in the stroma lamina, यानी कि वो हिस्सा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का जो कि स्टैक्ड फॉर्म में नहीं है, उसमें ये ज्यादा पाया जाता है। और या फिर अगर ये स्टैक्ड फॉर्म ऑफ द थैलाकॉइड में पाया जाए तो उसके एजेस पे पाया जाता है, मतलब इनर साइड पे नहीं होता, एजेस पे पाया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसको हम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और PS1 को PS2 के साथ कनेक्ट करता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ये दिस इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्ट्रोमा एंड इन द ग्रेना थैलाकॉइड, मतलब इसमें कोई खास किस्म का पैटर्न नहीं है कि ये ग्रेना थैलाकॉइड में ज्यादा होगा या ये स्ट्रोमा थैलाकॉइड में ज्यादा होगा, ये दोनों हिस्सों में ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड देखा जा सकता है। Thus, the two photochemical events that takes place in the oxygen evolving photosynthesis are spatially separated. This separation implies that one or more of the electron carriers that function between the photosystem diffuses from the grana region of the membrane to the stroma region, where electrons are delivered to photosystem 1. यही सारी चीज जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन की है, द डिस्ट्रीब्यूशन और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, उसको स्कीमेटिकली यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले आप इनके जो सिंबॉलिक आइकन्स हैं उनको रिमेंबर कर लें ताकि आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले एक ट्राइमेरिक आपको प्रोटीन जो है वो सिंबॉलिकली जो कि लाइट पिंक कलर में रिप्रेजेंट की गई है, LH लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटीन ट्राइमर, वो लाइट पिंक कलर में है और इस तरह की इसकी आइकन को रिप्रेजेंट किया जाएगा।
देन PS2 जहाँ जहाँ भी पाया जाएगा उसको इस दिस एलोंगेटेड आइकन की फॉर्म में, जो कि ऑलिव ग्रीन कलर का जो है, इसमें ये शो की जाएगी। देन साइटोक्रोम B6F का डायमर इस शक्ल में होगा, PS1 जो है वो इस शक्ल में होगा, और ATP सिंथेज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। तो PS सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PS2, जो कि सबसे पहले लाइट को आप कह लें कि हार्वेस्ट करता है और उसके साथ साथ वाटर की ऑक्सीडेशन का बायस है। तो हम बिफोर दैट कि हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि ये हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को शो कर रहे हैं इस डायग्राम में, और ये जो हिस्सा है, दिस वन इज द स्टैक्ड रीजन ऑफ द थैलाकॉइड, जिसको आप ग्रेना थैलाकॉइड के नाम से जानते हैं। एंड दिस वन, ये जो हिस्सा है, दिस इज द नॉन एप्रेस्ड और द स्ट्रोमा थैलाकॉइड, जो कि कनेक्ट करता है दो थैलाकॉइड के रीजन को। ग्रेना थैलाकॉइड में ही हम एक और टर्म को भी जो है वो बता देते हैं कि ये जो है, ये एजेस हैं ग्रेना थैलाकॉइड के, दिस वन एंड दिस वन, और ये जो ये हिस्सा है, दिस इज द कोर ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड, जो कि अप्रेस्ड रीजन के सेंटर में आता है। नाउ हम वन बाय वन ये जितने भी आपके पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो PS2 को अगर हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि PS2 जो है ग्रेना थैलाकॉइड में प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रोमा थैलाकॉइड है और इसके अंदर आपको PS2 कहीं भी नजर नहीं आएगा। बट इन केस ऑफ ग्रेना थैलाकॉइड ये आपको बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो नजर आएगा। अलॉन्ग विद इट आप एक और चीज को भी नोटिस कर सकते हैं, और वो है जी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 का ट्राइमर। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो ट्राइमर वो प्रोटीन्स हैं जो कि PS1 के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो PS2 के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे PS2 पाया जाता है, वहीं वहीं पे आपको ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी साथ साथ नजर आएंगे। देन हम थर्ड कंपोनेंट की तरफ जाते हैं, जो कि है साइटोक्रोम B6F डायमर, जो मैंने आपको बताया था कनेक्ट करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, PS2 को PS1 के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये ग्रेनम थैलाकॉइड में ज़्यादा पाया जाता है या ये अनस्टैक्ड या स्ट्रोमा थैलाकॉइड में पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रोमा थैलाकॉइड में भी मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि ये एजेस ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड एंड इनर साइड ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड, हर जगह पे ये आपको मिलेगा। सो इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन केस ऑफ PS1, जिसको मैंने आपको कहा था कि इस आइकन से हम शो करेंगे, PS1 को अगर आप देखते हैं, तो दिस इज प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली ऑन द एजेस ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड। आप इनर साइड पे किसी जगह पे भी इसको नहीं पाएंगे, या तो ये ग्रेना थैलाकॉइड के एजेस पे आपको मिलेगा, और या फिर ये ज्यादा पाया जाएगा इन द नॉन अप्रेस्ड रीजन और द स्ट्रोमा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो कि ग्रेनम नहीं बना रही, उसमें आपको ये ज्यादा मिलेगा। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि PS1 के साथ ही ATP सिंथेज भी होता है। ATP सिंथेज का काम PS1 के साथ ही एसोसिएटेड है। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ PS1 पाया जाएगा, PS1 जहाँ जहाँ मौजूद है, वहीं पे ऑलमोस्ट आपको जो है वो ATP सिंथेज भी मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि PS1 जो है वो एजेस ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड एंड इन द स्ट्रोमा थैलाकॉइड में पाया जाता है। आप ATP सिंथेज को भी देख सकते हैं कि वो एजेस ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड में मौजूद है, और इसके साथ साथ ये स्ट्रोमा थैलाकॉइड में भी मौजूद है। ये एक और तरीके से स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 टू फोटोसिस्टम 1 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की अरेंजमेंट आपको दिखाई गई है, और लेबलिंग यहाँ पे साथ में ही है, सो इसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रखी है कि मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्ब जो है वो यूटिलाइज हो सके और मिनिमल जो है वो वेस्ट हो सके। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे बात बताई थी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 जो हैं वो एसोसिएट होते हैं विद PS2 के साथ,
और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो एसोसिएट होते हैं PS1 के साथ। और मैंने आपको पीछे समरी में बताया था कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 क्योंकि एसोसिएटेड होते हैं PS2 के साथ, और PS2 जो है वो आपको स्टैक्ड रीजन या ग्रेनाथैलाकॉइड में ज़्यादा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दिस वन इज PS2 एंड दिस वन इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। जहाँ जहाँ आपको PS2 मिलेगा वहीं वहीं पे आपको साथ में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 भी साथ में मिलेगा। और ये जो है अप्रेस्ड रीजन या ग्रेनाथैलाकॉइड है, एंड दिस वन इज द नॉन अप्रेस्ड रीजन और द आप यूँ कह लें कि स्ट्रोमा थैलाकॉइड को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद आप देख लें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 जो कि इस शक्ल में यहाँ पे मौजूद है, और ये जहाँ जहाँ पे आपको मिलेंगे आप देख सकते हैं कि उसके साथ ही आपको फोटोसिस्टम 1 में मिलेगा। तो दिस वन जो है ये फोटोसिस्टम 1 है, और यहाँ पे आपको जहाँ पे भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ पे यकीनन साथ में जो है वो फोटोसिस्टम 1 भी पाया जाएगा। ऐसा तो हो सकता है कि फोटोसिस्टम 1 जो है वो अकेला प्रेजेंट हो और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 उसमें ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट हार्वेस्टिंग फोटोसिस्टम 2 जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे पाया जाए, लेकिन जहाँ पे फोटोसिस्टम 1 होगा तो वहीं पे ये पाया जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एटीपी सिंथेज है वो भी नॉन अप्रेस्ड रीजन्स में और एजेस ऑफ द अप्रेस्ड रीजन्स में पाया जाता है, वो भी उसको भी आप देख सकते हैं। दिस इज द नॉन अप्रेस्ड सॉरी एजेस ऑफ द अप्रेस्ड रीजन एंड दिस इज द नॉन अप्रेस्ड रीजन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एटीपी सिंथेज भी पाया जाता है। एंड दिस वन इज द ल्यूमन ऑफ द थैलाकॉइड जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, और आउटसाइड पे जितना भी एरिया है दिस वन इज द स्ट्रोमा ऑफ द थैलाकॉइड, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। In PS2, the oxidation of two water molecule produces 4 electron, 4 proton and a single oxygen. ये ऑक्सीजन जो है ये डिफ्यूज होके तो स्ट्रोमा रीजन में भी जा सकती है जहाँ पे ऑलरेडी एटीपी जो है वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। फंक्शनल रोल क्या है कि क्यों ये जो लार्ज सेपरेशन है बिटवीन द नैनोमीटर्स की बिटवीन द फोटोसिस्टम 1 एंड 2, ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये हम देख सकते हैं कि ये एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करता है बिटवीन द टू फोटोसिस्टम। The spatial separation between the photosystem 1 and 2 indicates a strict one-to-one stoichiometry between the two photosystems. That is not required. Instead, the photosystem 2 reaction center feed reducing equivalents into common intermediate pool of soluble electron carriers, plastoquinone, और photosystem 1 reaction center जो है this remove the reducing equivalents from a common pool rather than from any specific PS2 reaction center complex। तो दोनों के जो आप कह लें कि reducing equivalents हैं common pool जो हैं वो different हैं। Most measurements of the relative quantities of photosystem 1 and 2 वो देखी गई हैं कि there is an excess of photosystem 1 in a chloroplast। मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो फोटोसिस्टम 2 की फोटोसिस्टम 1 के साथ जो रेशियो है दैट इज अबाउट 1.5 to 1, मींस फोटोसिस्टम 2 अगर किसी में 1.5 अगर उसके यूनिट्स पाए जाते हैं तो फोटोसिस्टम 1 जो है इन द सेम क्लोरोप्लास्ट विल बी 1। लेकिन ये जो रेशियो है दिस कैन बी वेरी, और ये चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्लांट जो कि डिफरेंट लाइट कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं, तो उनमें ये रेशियो फोटोसिस्टम 2 की 1 के साथ ये वेरी भी कर सकती है। As I always suggested you that you must have go through the books from where the material has been collected. So these are the suggested readings: Hopkins, Introduction to Plant Physiology, and Plant Physiology by Theis and Ziegler. I have consulted different editions of Theis and Ziegler, and also some of the web essays are also recommended of the book Plant Physiology and Development for the further clarification of the topics. Thank you very much. This is all about today's topic. If you have any question and query, as always, you can post on GCR, on WhatsApp, or you can email me.